Hello everyone, how are you all? Mo Sudipta आपण मन पे नहीं आसी छी गोटे न्यू कंटेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जिते भी क्वेश्चन आसुची अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या अंडर ही आसीबो। आमे टोटल होल कॉन्स्टिट्यूशन को कवर अप करिबा बहुत ही फ्यू टाइम्स रे, ठीक अच्छी। सो लेट न करिकी स्टार्ट करिबा आमर कौन कौन टॉपिक अच्छी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट देखंतु जदि आपण माने प्रिलिम आउ मेंस ओपीएससी पय प्रिपेयर करूचंती देन आमर फाउंडेशन बैच आसीची बोथ ओडिया एंड इंग्लिश रे जोटा कि स्टार्ट हे सारी छी ऑलरेडी 10th ऑफ फेब्रुआरी 2025 रु। जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती देन मो कोड एसएसपी लाइव यूज करिकी आपण माने एई अपॉर्चुनिटी को डिस्काउंटेड प्राइस रे अवेल करि पारिबे। Next you can see the परीक्षा टेस्ट सीरीज जोटा कि ऑलरेडी हमारा लॉन्च है सारी ची। Those are preparing for this time 2025 OPSC, they can avail this also. And let ना करिकी देखिबा the Constitution of India and the parts of it. Parts of the Constitution of India, what is those? So have a look. These are, it is the longest written constitution in the world. Question एमिति आसी पारे which is the longest written constitution in the world? आपण मानू को आंसर देबार अछि। This is what? This is India. Okay, the longest constitution in the world, written constitution in the world is what? Na India. And it adopt हेथिला 26th of November 1949 रे, but it is coming to effect केबे 26th of January 1950. The dates, both the dates are important, ठीक अच्छी। So this is the constitute कहाँ को मानू को नहीं की होची the legislative assemblies and the executive judicial ता अंडर रे कौन होची, there are divisions, you can have a look. So it originally had 395 articles, 22 parts and 8 schedules, but presently kete achi na 395 articles instead of 395 now it is for 70 articles and 22 change hai ki 25 and again 8 change hai ki 12 articles re amara kon convert he jai chi. So this is also very important for the exam perspectives. Next देखिबा drafting committee रो chairman की रहउचंती। आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन डॉक्टर बीआर आंबेडकर एंड तांगर बर्थ एनिवर्सरी रहउची एवरी ईयर 14th of April। मने रहिबो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इज डॉक्टर बीआर आंबेडकर एंड तांगर बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर देउची 14th of April every year। सो प्रीएम्बल रे आमर इंडिया रे कोन मेंशन अछि, कोन डिक्लेयर हेछि? In the preamble mentioned achi that India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic country. Okay, what? Now India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic country. माने रहिबा। So next देखिबा the kind of fundamental rights. What are the fundamental rights? These are 6 fundamental rights mentioned in the Constitution of India. What are those? These are under Article 12 to 35 mention heichi. These are what? Right to equality, right to constitutional remedies, cultural and education rights, right to freedom, right against exploitation and the right to freedom of religion. छटा देखो कौन कौन अच्छी बिकॉज द 6 आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो आम गोटे गोटे करके देखिबा कौन कौन अच्छी। सो व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी मेंशन हेची अंडर आर्टिकल 14 to 8 कौन मेंशन हेची? दिस इज गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, equality before the law and equal protection of the laws, prohibits discrimination and the abolishes of untouchability। जेते बेले discrimination question आसीबो या फिर untouchability आसीला then आपण माने कोन करिवे? This is what? ना right to equality and mention हेची under article 14 to 18 बोली mention करिवे, ठीक अछि। Next, so right to freedom ताकू को आर्टिकल अंडर मेंशन हेची। दिस इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 19 to 22।
and कौन कही आर्टिकल रे बिकॉज इट इज प्रोवाइड्स फ्रीडम सच as speech and expression, assembly, association, movement, residence and the profession with reasonable restrictions. So जेते बेले आपनकर आसिला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच विषय कहला या फिर आमर एक्सप्रेशन आमर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस सो ए सब आमर को आर्टिकल मेंशन हेजी ना आर्टिकल 19 रो 22 एंड एटा कोठी मेंशन हेजी ना दिस इज राइट टू फ्रीडम मने रहिबो ओके नेक्स्ट देखिबा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन कि हम जबरदस्ती कहा को किछि करे परिबा नाही दिस इज राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन आसी जीवो अंडर आर्टिकल 23 टू 24 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग forced labor and child labor ensuring protection from exploitation आमे फोर्स करी कि कहा को काम करे परिबानी unless कहा को भी करे परिबानी no unless no nothing so forced labor human trafficking and the child labor we cannot do that so this will be under article 23 or 24 and right against exploitation under रे तमे माने पनिश हबो if you will do such things next देखिबा next is right to freedom of religion what is the right to freedom of religion this is mentioned under article 25 to 28 secures that under article 20 to 25 the right to profess practice and propagate any religion while ensuring that all religious practices are conducted freely without discrimination so right to freedom of religion जे कोनोसी लोको कोनोसी religion को change करि परिबो without anyone's permission like law ताको कोन किछि हस्तक्षेप करिबो नाही जदि तांको रिलीजन रो लोक माने किछि रूल बनै चंदी तांको एक्सेप्ट करि परिबे then they can do that in that case law will never interrogate okay so cultural and educational right कोन अछि ना आर्टिकल 29 रो 30 अंडर रे हमर कोन आछि ना cultural and educational right what it says protects the cultural identity of minorities and grants them the right to conserve their language script and culture along with the right to establish and administer educational institution हमर कहार ना cultural education right रे कहूची कि जे कोनोसी कल्चर लोक माने नो मैटर माइनॉरिटीज होंदु या फिर मेजॉरिटीज होंदु मेजॉरिटी तो एमिति डेफिनेटली से माने कोन जोर जार मुलकतार करी कि रखी चंदी बट द माइनॉरिटीज का केस रे नोबडी कैन फोर्स देम टू हाइड देयर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दे cannot use their languages in India this is not like that like they can use their languages they can speak in their own regional languages there if anybody can stop them they can punish under article 29 ru 30 okay so they can script तांकर जति किछि भी ओल्ड स्क्रिप्ट अछि जोडा कि तांकर एंशिएंट एजेस थ्रू से माने मानु आसुचंदी से माने तांकु भी बध्य कोन हमरो स्टोर करी कि रखि परिबे तांकर गोटे किछि कल्चरल हेरिटेज अछि ताकु भी से माने कोन विदाउट एनी प्रोहिबिशन से माने ताकु यूज करी परिबे ठीक अछि सो दिस इज अंडर आर्टिकल 29 ru 30 Next देखिबा right to constitutional remedies what is the right to constitutional remedies article 32 under आसुची empowers citizens to approach the supreme court for enforcement of their rights if they are violated so जो articles हमर अछि जेमति right to speech हला right to freedom of speech हला freedom of saying anything whatever freedom of the private property हला या फिर किछि भी रही हमर जे कोनोसी लॉ रहउची तो ता अगेंस्ट जदि सिटीजनशिप को किछि भी कुहा गला जेमिति कि हमर कोन रिलीजन बेस रे हैला या फिर हमर कल्चरल बेस रे किछि भी जदि हमर राइट्स अछि ता अगेंस्ट जदि किछि लोक माने जाई कि कहा को कहउचंदी देन दे कैन appeal to the supreme court to punish them so eta kaha under रे जिवो आर्टिकल 32 अंडर रे that right to constitutional remedies मने रहिबो so these are gala amar kono na rights and about the DPSP the directive principles of state policies guidelines for what for socio-economic justice under article 36 through 51 this is mentioned under article 36 through 51 what is na DPSP directive principles of state policy next dekhiba what is the fundamental duties there are 11 fundamental duties 11 duties and 42 amendment are inside India under article what under article 51A under article what na 51A
So amara 11 duties achi. What are those? The first one is abide by the constitution and respect national flag and anthem. So constitution amara mention heichi any citizen of India they are bound to respect the national flag as national anthem also. Follow the noble ideals of freedom struggle. Protect sovereignty and integrity of India. Defend the country and render national services. Spirit of common brotherhood and preserve composite culture and preserve natural environment. Develop scientific temper. Safeguard public property. Strive for excellence. Provide educational opportunity for children under 6 to 14 ages. These are the 11 duties the citizens of India have to follow under Constitution of India. Okay, clear? So next देखिएगा the parliamentary system. What is the parliamentary system? The parliamentary system has been divided into two types. That's why it is called as bicameral legislative or bicameral legislature. Why? Because it is have two. That's why by one is Lok Sabha and another is Rajya Sabha. So what is the legislative council? Divided parliament into bicameral, two houses, one is Rajya Sabha and another is Lok Sabha, one is the कौन आमे कहूचे ना lower house and the upper house. तो state रे हमर भी same method रे होची bicameral legislative assembly and the legislative council known as the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad. So unicameral only one house जोटा कि हमर कौन अछि इंडिया रे जोटा कि हमर लागुनी जोटा कि हमर कोथरे यूके रे लागुची लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नो लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा रे हमर ओनली यूनिकैमरल जोटे ओनली वन हाउस इज प्रेजेंट ओनली वन मींस लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली नेक्स्ट देखिबा सो जुडिशियरी व्हाट इज जुडिशियरी independent judiciary with Supreme Court as the highest authority. So India ra judiciary ko type ro na India has the independent judiciary and Supreme Court as the highest authority of India. Okay, so देखंतु Supreme Court होची highest ता under ए High Court ता under ए District Court and the additional district judges ता under ए subordinate judges class 1. These are the kind of High Courts and Supreme Courts. The higher authority here is the Supreme Court. And Justice Sanjeev Khanna is the Chief Justice of India as of now. And he is the 51st Chief Justice of India. माने रहिबा नेक्स्ट सो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सो इंडिया रे हमर केते टाइप रे इमरजेंसी अछि ना तीन टाइप रे इमरजेंसी अछि ना कोन कोन मैम दिस इज आमर रहिला नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी बट नेशनल इमरजेंसी को जगह रे लागिबो स्टेट इमरजेंसी को जगह रे लागिबो फाइनेंशियल इमरजेंसी को जगह रे लागिबो ना अंडर आर्टिकल 352 ड्यू टू वार external aggressions and the armed rebellion ए केस रे हमर कोन लागिबो ना नेशनल इमरजेंसीज स्टेट इमरजेंसी को केस रे लागिबो ना अंडर आर्टिकल 356 सेटा मेंशन हेछि कि ड्यू टू फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स से केस रे हमर कोन लागिबो ना स्टेट इमरजेंसी लागिबो एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को केस रे लागिबो ना मैम एटा मेंशन हेछि अंडर आर्टिकल 360 कि ड्यू टू ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट टू इंडिया किछि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जदि नथिबो इंडिया रे किछि भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आसिला देन जोटा कि हमर कोन मनमोहन सिंह का टाइम रे ऑलमोस्ट लागिबार थिला एट द टाइम मनमोहन सिंह वाज द कोन फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंडिया सो से टाइम रे हमर कोन हेतिला ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू लागू रहि जाइथिला सो दीज आर द काइंड ऑफ व्हाट ना थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया सो इंडिया रे टोटल केते टाइप एकटा भी एग्जाम रे पढि पारे के पढि पारे नहीं पड़ुछि ही इंडिया रे केते थरा हमर इमरजेंसी डिक्लेयर हेछि ना द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया 3 times whereas the state emergency and the financial emergency has not been declared yet so in 1962 1971 1975 these are the 3 years where the national emergency has been declared so 1962 during the India China war 1971 during the India Pakistan war and in the 1975 आमर जेतबे इंदिरा गांधी का टाइम रे गवर्नमेंट सेवन रूल करूथिले जून 25 1975 टू 1977 एते के टाइम तक से कोन ना डिक्लेयर करिके रखिथिले नेशनल इमरजेंसी डोंट नो व्हाट इज द रियल रीजन बट कहा जाउछि कि
because of the internal disturbances national emergency declare heithila. Okay, so official languages of official language amara India रे कौन रहुची ना हिंदी is the only official language in India in Devanagari script. मने रखिबो देवनागरी स्क्रिप्ट रे हमर कोन ना हिंदी in the Devanagari script mentioned as the official language of India. But the sixth classical languages which have been divided in India, that are on which year it has declared as the classical language, सेटा मेंशन हेची तमिल 2004 रे, संस्कृत 2005 रे, तेलुगु 2008 रे, as Canada also 2008 रे, and Malayalam 2013 रे, and as we can say proudly Odia भी amara one of the classical language has been declared on 2014. Okay, so Hindi amara official language है under article 343. The article also very much important, you have to remember. So what is citizenship? This is under article 5 to 11. Under article 5 to 11 the citizenship of India has been mentioned. These are the following of citizenship, that like categories हेची याकू follow करिकी citizenship को अपन avail करी पारिबे, and the citizen of India have to follow these kind of rules. What 5 6 7 8 9 10 11 जे mention हेची 5 रे citizenship at the commencement of the constitution, 6 रे rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan, rights of citizenship of certain migrants to Pakistan, rights of citizenship to certain person of India origin rights residing outside India, या फिर person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, continuance of the rights to citizenship, parliament to regulate the right of citizenship by law. So these are what na citizenship and the article 5 to 11 mane rahiba. Next देखिबा. So what is the election commission? Election commission is under article 324. What it has mentioned, that independent body responsible for free and fair elections, and the recent CJI जे कि हमर के रहउछन सॉरी CEI सॉरी चीफ इलेक्शन कमिशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मन पड़िगले सॉरी. सो ज्ञानेश कुमार रहउछंती हमर के ना currently serving Chief Election Commissioner of India, who is the 26th Chief Election of India. ठीक है, Chief Election Commissioner of India is the Ganesh Kumar, serving 26th number, and कहा को succeed कले Rajiv Kumar was the ex Chief Election Commissioner of India. So now about the Panchayati Raj. So National Panchayati Raj is celebrated on 24th of April every year, and it केबे हेइथिला introduced on 73rd amendment 1992 रे. The year and the amendment both are important. Next, municipalities strengthened by the 74th amendment 1992. 1992 रे देखंतु 73rd रे मेंशन हेची पंचायती राज, 1992 74th रे मेंशन हेची किए ना हमर म्युनिसिपैलिटीज को केमिति डिवाइड करा जायछि ना अंडर नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नगर पंचायत कहाँ अंडर रहउछि नगर पंचायत अंडर रहउछि रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन एरियाज, whereas म्युनिसिपल काउंसिल अंडर रहउछि स्मॉल अर्बन एरियाज, एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर रहउछि लार्ज अर्बन एरियाज. गॉट इट? नेक्स्ट देखिबा. So what is the doctrine of basic structure? Doctrine of basic structure, what is that? The Supreme Court ruled that certain features cannot be amended. किछि जिंस लाइक जोड़ा ऑलरेडी हमर कोन फीचर्स ऑलरेडी अमेंड हेछि ताकू अगेन अमेंडेड करि परिबा नाही आमे. जेमिति कि शंकरी प्रसाद केस 1951 रे, सज्जन सिंह केस 1965 रे, गोलखनाथ केस 1967 रे, एंड द वेरी फेमस केशवानंद भारती केस 1973 रे, एंड इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 रे. एउडा को अगेन कोन अमेंडमेंट करि हबो नाही. सो दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. मने रखंतु व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड किछटा एग्जांपल्स भी ता सहित मन रखि दैथिबे. एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी amended. मन रहिबा ति जिंस. नेक्स्ट देखिबा.
What is the single citizenship? India has provides only one citizenship for a single person. गोटे single person इंडिया रे सिटीजनशिप जदि नहीं थिबो से अलगा को कंट्री रे नेला देन इंडिया रे थिबा सिटीजनशिप तार कैंसिल हे जिवो से अलगा को कंट्री रे जदि सिटीजनशिप कैरी करूची देन से गोटे टाइम रे दीटा सिटीजनशिप रखि परिबनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. सो यूएसए हैज द कोन ता पाखरे अछि से पावर एंड सी भी देइछि तांकर सिटीजन मानकू कि से माने कैरी करी पारिबे दि तीनटा कंट्री रे सिटीजनशिप बट इंडिया हैज ओनली वन सिटीजनशिप. So what is the important amendment of constitution? जते कि आमे पढिले constitution विषय रे से भीतर important amendments किछि रहि छि जोडा को हमहु जानिबा निहाती दरकार. जेमिति कि 42 amendment जोडा कि 1976 रे हेथिला एंड एटा रे कोन एडेड हेछि socialist secular and integrity to preamble strengthened DPSP. 44th amendment 1978 रे एटा को कोन एस्टैब्लिश हेथिला revoked emergency powers restored fundamental rights and 73rd amendment रे हेथिला 1992 रे एटा एस्टैब्लिश हेथिला कोन एस्टैब्लिश हेथिला ना पंचायती राज सिस्टम जोटा कि लोकल गवर्नमेंट in local self government in villages. 74th amendment जोटा कि कोन municipalities and the 86th amendment 2002 रे हेथिला बहुत important कोन ना made right to education 6 to 14 years children मानक पई a fundamental right article 21A. So 101 amendment 2016 ने कोन हेतिला ना implemented goods and service tax GST जोटा कि हमर कोन नरेंद्र मोदी सरकार आसिला परे ही एटा हेछि. So 103rd amendment 2019 ने कोन हेछि introduce 10% reservation of for what ना EWS economically weaker section रो कैटेगोरीज रो लोक मानक पई हमर कोन ना 10% रिजर्वेशन अछि कोन अछि कोन से गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट सेक्शन रे. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई थिंक आपण मानकू क्लास हेल्पफुल हबो एंड इफेक्टिव भी लागिबो. बहुत सारा मेन पॉइंट आपण मानक पई नै गेस्तिली. जदि आपण ए भले टॉपिक रे अलगा किछि क्लास कंटेंट चाहू चंती देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन देन म आपण पई नेक्स्ट क्लास रे नै गेस्तिबी. ठीक अछि. सो जीवा पूर्वर आमे देखिबा कि हमर प्रारंभ बैच ओपीएससी एस रो लॉन्च हे जाईची हमर 15th ऑफ फेब्रुआरी रो जोटा कि ओपीएससी एस 2025 रो फाउंडेशन बैच टॉप एजुकेटर्स माने आपण रहउचंती हमर आपण को गाइड करिवे PUIQ डिस्कस करिवे डेप्थ रे आपण को जाई डिस्कस करिवे एंड आपण को किछि भी पर्सनल गाइडेंस दरकार यू कैन कॉल देम आफ्टर enrolling the batch and to enroll the batch you can use my code SSP live then you can avail the discounted price. Okay, so with the ASO batch 1 another batch has been launched that is Pratham for the OSSC CGL 2025 and this is the foundation batch and amara top educators mane achanti apan man को guide kariba lagi seita bi amara 15th of February ru launch he sari chi. In that batch you can also use my code SSP live to avail the discounted price. So thank you so much, have a good day and stay tuned for the next upcoming videos. And guys, more importantly kahibi, never lose the hope, stay focused what you have decided, what you have strongly focused for and what your aim is really. And बहुत सारा disturbance भी आसीबो, बहुत सारा restrictions भितरे भी आपण मानकू गति करिया को पड़िबो, मूव ऑन करिया को पड़िबो. Still that stay focused. The one thing I will say that never distracted. Thank you so much. Have a good day.